Hello. So, dear students and my dear friends, so welcome to the class. So, my dear friends, today I am going to discuss about the magnetostatic part from it's a part from the subject called electrodynamics. So here basically we'll talk about the magnetic field, magnetic force, those topics and the application of magnetic field and magnetic force. So every time you can see the question in the previous years the examination like CSI, NET and GATE, JS, TIFR. So let us directly move to this topic. So in magnetostatic, what it is actually, basically here we will discuss that you know that when a charged particle is suppose moving, okay, when the charged particle starts moving, then it will produce a magnetic field around the charged particle. Okay, so that type what will be the magnetic field at different field at different point, okay, that we will discuss here. So you see that when a charged particle, if I take a plus charged particle, okay, this is a charged particle q, and this charged particle is suppose moving, okay. So when it is moving, it must have a certain velocity, that is v, clear. Now the thing is that when the charged particle is static, that means when the charged particle is at rest, it will not produce any magnetic field, okay, but while it starts moving, it will produce a magnetic field. That magnetic field at different point we are going to find out, okay. You see, when this charged particle is moving in any direction, suppose in this direction with the velocity v, and you have to find out the magnetic field at a point, suppose p, at this point p, and this distance is, you know, that from this charged particle, that is suppose r. So what will be the magnetic field when the charged particle is moving? So at that point, what will be the magnetic field, that we have to find out, okay. Remember that this magnetic field at point p depends on when the charged particle is moving. It means, you see, when charged particle is moving means what? The current, current means what? Movement of charged particle, okay. So you see that I'll say here, if I write the heading, that magnetic field, field magnetic field due to moving pointers, pointers these are pointers, right? This is the pointers, okay. So when it is moving with the velocity v at point v, we have to find out the magnetic field. Now it is found that this magnetic field depends on, suppose this magnetic field, you know, this b depends on, and it will depends on the charged particle. So it will be proportional to the charged particle, and it will be proportional to, you know, the velocity of the charged particle. It is also proportional to the velocity of the charged particle, and it is also, you know, depends on the distance from the charged particle to what point we are going to find out the magnetic field. So this separate distance, it is proportional to like 1 upon r square, okay, and also it is dependent on the angle along which direction the charged particle is moving and along which direction we are going to find out the magnetic field. So this angle, so it is dependent on the proportional to sine of this angle, okay. So these are the variable, so with the magnetic field, okay. So if I, these are the proportional, okay, if I equate it, or if I proportional, so if I combine it, it will be q v sine theta upon r square, okay. Or if I equate it, it will be b equal to, one constant will come, that constant finally it was got like mu naught upon 4 pi and q v, you know, sine theta upon r square, where this mu naught is the permeability of free space. It means this combination is displacement is in a free space, okay. If I say the charged particle moving in another medium,
this is in air medium. If you say this charged particle moving in another medium, in that case the magnetic field will also vary, because for different medium the permeability will be different. Okay, so this is the magnitude actually. This is the magnitude of the magnetic field. But you know that magnetic field is a vector quantity. So once it has a magnitude, it must have also direction. Now how to find out the direction? At point P, this is the magnetic field magnitude. At point P, what will be the direction? The direction, for direction you can find out. So if I express it in terms of vector form, it will be like this. You know, mu naught upon 4 pi, and q is a constant. Okay, q charge particle is a constant, and v the vector quantity. You see, v the vector quantity. Okay, and cross, if I say here r vector upon this will be, I have to write it modulus of r cube. This means magnitude of r cube. Is it? Now see, this is the displacement from q charge particle to along this point we are finding the magnetic field. Okay, along this r direction. So if I say this is a vector quantity, this r is equal to magnitude of an r cap. So r cap will be the along this direction, and v direction is along this direction. Now if I put r vector here, I will get one magnitude r and r cap. Okay, one magnitude and r cap. So that one r and one r will cancel each other. It will be like r square, just like this. You got this point? Just like this. So see, this is the vector from. Now how to find out the magnetic field direction? That you see, it is a vector cross product, right? So when it is a vector cross product, so you have to in vector cross product there are different rules. So best way is you use your left hand rule. So you make a curve from B to R. You make a curve from B to R like this, and thumb in this thumb will give you the direction of magnetic field. So if I make a curve like this from V to R, thumb is inward to the board. That means if I make a curve from B to R, thumb will be inward, and that inward direction is represented by a cross mark, and this means inward. Sometimes I use directly this. Okay, it means that inward magnetic field direction is inward. Or if I say sometime like this, if I represent this in this way, it will be outward. Outward means along the in your direction. Okay, like this direction. Inward means inward to the board. Outward means outward from the board. Okay, perpendicularly outward. Okay, so this is the magnetic field direction. So here it is the direction inward. Here I have to write, because this is a magnitude. Once I give this side, it means inward direction, but it is already a vector form. No need to write down here the direction. You got this point? Now again you see, so if I take the point along this side, so that is suppose P dash, okay, and this distance again is suppose that R dash, and this angle is suppose that theta dash, then what will be the magnetic field? Like this, you can find out the magnetic field will be mu naught upon 4 pi, that Q is same, and V dash sin theta dash divided by R dash square, right? So this will be the magnitude, but what will be the direction? Now you have to make a curve here, so it will be mu naught upon 4 pi, Q B dash cross, it will be V dash vector cross R dash vector upon R dash modulus of R dash whole cube. It will be just like this. So you have to make a curve from B dash. Okay, this B direction is same. Okay, no need to write B dash. Okay, V. Okay, okay. So V, if you make a curve from V to R, okay, V to R, then thumb will be outward from the board. So this time this thumb will give you the direction of magnetic field. Here it means like this. Here no need to write represent like this. Okay, it means you see
the magnetic field vary at different point. If I take the point is here, if I take the point is here, the magnetic field is not constant, okay, at different point. But and also the magnitude of magnitude is not constant, and also the direction is not constant. Here it is inward, here it is outward. Sometimes if I say, you see, I will take this case later. If the charge particle is here, if the charge particle here, the magnetic field, and here what will be the magnetic field, that means at the center, if I place a charge particle here, what will be the magnetic field, here what will be the magnetic field. Of course the magnetic field magnitude will be same, but because of the direction, that magnetic field will be different. Okay, so this type of problem we will take later. So I hope you got the idea that when charge particle, point charge particle is moving, then in that case what will be the magnitude of and direction of magnetic field. Now this formula we will use in different case. So you already got this type of idea in lower class, but here we'll take in a different way, so that it will be more easy to understand the application of our CSIR net examination. So let us take that magnetic field due to current carrying wire, magnetic field due to current carrying wire. It means if you have a wire, so if you have a wire, then and the current is passing, suppose you know that I current is passing through this wire, and you have to find out the magnetic field at point P, and this is at a distance from the wire, suppose you know that P, at point P, what will be the magnetic field, and this distance is suppose R again. Okay, now the thing is that already we discussed the for point charge, what will be the magnetic field. Now current, when current carrying wire means what, the charge is moving, motion of charge, it means that the current. Okay, so charge flowing per unit time is nothing but the current. So if I take an infinitesimally small element of length, you know, that is suppose dl of that wire, what will be the charge flowing through this wire, that is you know suppose dq, if I say dq. Okay, so now this will, I can say, if I say consider a small elemental length. So let us take this is just like a point charge, okay, because we are going to use the earlier concept now. And dl, when I consider this is dl, what will be the direction of dl will be along this direction, tangential to the of the wire, tangent of the wire. And you see this angle, if I say this angle is theta, now this time the picture is just like this. This is an elemental wire, and dl direction is like this, and this point P and R, this angle is theta, just like an earlier case. So but here the case is the charge is not q, charge is dq. Okay, and I current is flowing, so we can express this dq we have assumed, right? But the thing is that early I current is given and length of the wire is not given. Okay, so you consider a small elemental length. So we know that the earlier formula B equal to mu naught upon 4 pi q, you know, V cross R upon modulus of R cube, right? This is the vector form. But here you see, if I put here mu naught upon 4 pi, we are going to use this formula. Instead of dq, we have got that the charge, instead of q we have got charge dq, clear? And v, and this dq amount of charge is suppose the velocity is v, okay, and this is v cross R is same, this is R. Now the thing is that you know that R cube.
Now dq we assumed, but dq we have to express in the known quantity. Now what is nothing but, you see, through this d element the I current is also flowing. होल करंट जितना वायर में जितना फ्लो होगा डीएल में तो उतना ही करंट फ्लो होगा कि नहीं? ओके, द करंट विल बी सेम. So I is current is nothing but, if I say dl through this dl, it is dq upon dt, because current is nothing but rate of change of the charge particle. ठीक है, charge flowing per unit time. So from here what I can write, dq equal to I into dt I can write. So if I put here dq, it will be I into, and dt, this will be v cross r upon modulus of r cube. Now I is a constant, right? I is a constant. What I can write, dt multiplied with v, you know that s equal to vt, right? S equal to vt. ये बात आपको पता है कि ये s क्या होता है? डिस्टेंस होता है. डिस्टेंस होता है कि है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, अगर वो आप बाद में देख लेना, क्योंकि जब ये डिस्टेंस का होगा तो ये स्पीड होगा, जब ये डिस्प्लेसमेंट का होगा तो ये वेलोसिटी होगा. ओके, सो मतलब क्या है कि ये dl डिस्प्लेसमेंट, इफ आई से dl डिस्प्लेसमेंट में करंट कितना जाएगा, दैट विल बी dl विल बी, सॉरी, यहां पर डिस्प्लेसमेंट dl विल बी v into dt. ठीक है, सो v dt इंस्टेड ऑफ v एंड dt, व्हाट आई कैन राइट हियर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई dl, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, dl is displacement, and cross r modulus of that r cube. ये आ गया. और what I can write, that म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin theta divided by r square ही होगा. This is the magnitude and this is in vector form. Okay, but when it is a magnitude, okay, what will be the direction of this magnetic field? Again you have to, okay, that charge particle is moving like this, charge particle is moving like this from this. Okay, dl cross r, dl का direction इसमें था, dl इसमें था, and r का direction ये है. So you have to make a curve from dl to r. You see, again it will be inward, direction will be inward. So in this point, the direction of magnetic field at the point P, it will be inward. If I take the point here, it will be outward. Clear? Actually what actually happened, that magnetic field जो direction, मैंने क्या कहा कि ये magnetic field direction यहाँ पे inward है, यहाँ पे outward होगा. तो बात ये है कि magnetic field का जो direction होता है, देखिए आप, जब भी हम करंट का डायरेक्शन लेंगे, उस डायरेक्शन में थोड़ी देर बाद में बता रहा हूं वो डायरेक्शन किस टाइप का. अब बाद में, अभी तक ये समझ लीजिए, इन दैट पॉइंट इट विल बी इनवर्ड, इट विल बी आउटवर्ड टू इन दैट प्लेन, इन द प्लेन ऑफ द पोर्ट. ओके, so this we have got idea. This is nothing but your Biot-Savart law. This is called your Biot-Savart law. You see, in electrostatic and magnetostatic there are many analogous, many like what we called in electrostatic like Coulomb's law. Okay, as the similarly here this is analogous to in magnetostatic, it is Biot-Savart law. In electrostatics we use that called Gauss law. Here in magnetostatic we'll use the same analogous formula that is called Ampere's circuitry law. So these are analogous, just we have to replace those terms. In case of electrostatic हम वहां पर क्या करेंगे, चार्ज पार्टिकल लेंगे, यहाँ पर हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक. इन केस ऑफ यहाँ पर वो मैं बाद में बताऊंगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा या, ठीक है, तो वो अभी मैं थोड़ा सा एनालॉगस हो, वो मैं बाद में बताऊंगा, जब मैं पोल डाइपोल मोमेंट डिस्कस करूंगा, मैग्नेटिक पोल डिस्कस करूंगा, वहां पे मैं बता दूंगा. ओके, नाउ फॉर दिस अप टू दिस वी हैव गॉट द आइडिया. और एनालॉगस है, ये सारे चीज एनालॉगस है. जैसे ग्रेविटेशन में भी हम वही फोर्स पढ़ते हैं कि नहीं, फोर्स जब लगाते हैं, है ना, तो उसमें आपको क्या कहा जाता है कि उसमें सिर्फ जी लेते हैं, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज पार्टिकल लेते हैं. डीज आर वेरी एनालॉगस. आपको सिर्फ कुछ टर्म वहां पे रिप्लेस करना पड़ेगा, जो मेन पैरामीटर है वो रिप्लेस करना पड़ेगा, वो अलग अलग होंगे. नाउ सो वी हैव गॉट द मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट चार्ज पार्टिकल, देन बिकॉज ऑफ वेयर. Now the condition is, if I say here I took the where is in any shape, clear,
if I take the wire straight, okay, then I current is suppose flowing, and at a perpendicular distance at point P, at a distance suppose A at point P, what will be the magnetic field? आपको ये कैसे फाइंड करेंगे? इसको देखिए, मैग्नेटिक फील्ड, इसको मैं लिखूंगा हेडिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट current carrying wire. थोड़ा सा धीरज रखिए. आई एम गोइंग टू डिराइव दिस फॉर्मूला, बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस. एक फॉर्मूला, एक ब्यूटीफुल रिलेशन आएगा, उसको आप याद रखना है. बाकी जो कैलकुलेशन है यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, क्योंकि वो हमें जानना पड़ेगा आया कैसे. इफ आई डायरेक्टली राइट डाउन द फॉर्मूला, then you will be confused that from where we got the formula. Okay, so that is why I want to derive this formula here. So let us derive. 2-3 मिनट में हो जाएगा, आप इतना चिंता मत कीजिए. Suppose at a point, at a distance r, you have to find out the magnetic field. Clear? तो इसका मान लो कि ये x and y is a wire है, and the I current is flowing, and at a perpendicular distance from this wire at point P, what will be the magnetic field and magnitude and direction? Okay, now see, यहाँ पे कुछ जो मैंने वायर लिखा था वो करंट कैरिंग वायर बायोसेवर्ट लो, वही मैं यहाँ पे यूज करूंगा. If I take an infinitesimally small, suppose a small elemental length of that is suppose dl of this wire, तो ये लेंथ एलिमेंट कितना हो जाएगा? I इंटू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, I इंटू dl हो जाएगा कि नहीं? थ्रू दिस वायर, थ्रू दिस d एलिमेंट लेंथ. और मैं ये बताऊंगा कि सपोज दिस dl मेक्स एन एंगल, इसको मैं थोड़ा छोटा लिखता हूं r. दिस dl मेक्स एन एंगल phi, and this angle is that suppose theta. And ये जो है from here to here, this distance is suppose that is called your a. Okay, that is a, and from here to here ये l है. मतलब कहां से कहां तक? यहां से यहां तक ये l है, मतलब यहां से. So I will mark this as a, this is p, this is o, or this is q point. You got this idea? So this phi हमने एज्यूम किया, ठीक है, ये phi एज्यूम किया, बट यहाँ पे ये एंगल मान लो कि थीटा है. लेट अस टेक दिस थीटा. दिस इज a, और ये a एंड l हमारे पास गिवन नहीं था, हमने एज्यूम किया कि इसका साइड ये है. ओनली गिवन क्या था? r था, और करंट गिवन था, करंट फ्लोइंग. ठीक है, तो अब देखिए, now this is just like if I consider a small elemental length dl, and for this length what will be the magnetic field at point P? Just अभी हमने डिस्कस किया, that is for d element length it will be like dv, so it is mu naught upon 4 pi I current dl and sin theta upon divided by r square. Let us take the magnitude. ठीक है, जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था ये लेके, ठीक है, वो अभी तो हमने ये फॉर्मूला क्या आया था? b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. ये आया था ना जस्ट बायोसेवर्ट लॉ में, वही मैंने यहाँ पर यूज किया. ठीक है, नाउ यू सी हियर द sin थीटा हमने एज्यूम किया, a एज्यूम किया, ये l एज्यूम किया, बट यू सी दिस dv मैग्नेटिक फील्ड वेरीज विथ व्हाट? It varies with theta. If I take theta, if I element, so length element, if I take here, then this theta will be changed. If I take, it will be here, this theta will be changed. Again, L also will be changed, and also A also will be changed. You got my point? A also will be changed. So you see everything, this dl, and also this ये जो है, अगर यही पॉइंट में ये एलिमेंट अगर मैं यहां पर ले लूंगा तो ये r इक्वल टू a हो जाएगा. अगर मैं इधर लाऊंगा तो a बड़ा हो जाएगा.
That means this dl के ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा एंड r के ऊपर डिपेंड करेगा this dB magnetic field. So we want to express this dl, theta and r in terms of in terms of only one parameter that is called phi. Okay, for this वो हम कैसे करेंगे? अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि what will be the value of this theta? First tell me, this theta will be what? From this triangle, like the triangle POQ, what I can say that theta is equal to, from this triangle, theta equal to 90 degree minus 5. होगा कि नहीं? गड़बड़ हो रहा है क्या? इसी the total angle, okay, let us verify. The total angle is what? एक एंगल में, एक ट्राइंगल में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री. 180 डिग्री, एक एंगल 180 डिग्री इज इक्वल टू योर, एक एंगल है, अच्छा ये एंगल कितना है? 90 डिग्री. सो दिस इज योर 90, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर. 90 प्लस थीटा प्लस 5, राइट? सो फ्रॉम हियर इट विल बी 90 equal to theta plus 5. So from here what I can say, theta equal to 90 minus 5, यही होगा. Okay, so if I say theta equal to 90 minus 5, what I can say that sin theta equal to sin 90 minus 5, right? And what will be the sin 90 minus 5? It will be cos 5. So instead of sin theta I will write cos 5. Now ये जो cos 5 है, what will be the value of this cos 5? कितना आ जाएगा? Cos 5 again from the same triangle POQ, ये ट्राइंगल है. अब देखिए, अगर आपको दिक्कत हो रहा है, now I want to redraw this triangle. एक होगा ये, एक होगा ये और एक होगा ये. Okay, this angle is phi and this angle is theta and this is perpendicular. Okay, if this and this is your r and this is your a. Okay, if this angle is 90 degree and this is phi, and we are going to find out phi, so cos phi, this will be your perpendicular and this will be your base. So cos phi means base and this is hypotenuse. Cos phi means base by hypotenuse. Base means r, hypotenuse means a. You got my point? Base is this, okay, and hypotenuse is this. So from here what I can write? From here r equal to, what I can write, a cos phi. R equal to, not a cos phi, just a minute. Yes, your R equal to कितना हो जाएगा यहाँ से? R equal to a, और A equal to कितना हो जाएगा? A equal to R upon cos phi. अच्छा, यहां पर एक बात देखिए, ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो पहला ये जो था ना, ये था और एट ए डिस्टेंस r, वही था, उसका फॉर्मूला थी. यहां पर r डिस्टेंस था, लेकिन यहां पर हमने क्या लिया? ये जो dl है ये लिया है कि नहीं? सो dl है और dl से इस पॉइंट का दूरी कितना है? व्हाट इज द डिस्टेंस? दैट इज a, नॉट r एक्चुअली. सो व्हाट आई हैव टू राइट हियर, a स्क्वायर. ओके, this is not r square here because in earlier case we took at a distance r, but यहाँ पर dl कहाँ पर लिया वही हमने यूज किया, तो यहाँ पर at a distance, so I have to write here, so please make it correct that it is a square. Now it is okay. Now a we have got in, we have expressed in terms of phi, and what I can write from the same triangle tan phi, yes, tan phi equal to, because we need dl. So your tan phi will be perpendicular L upon hypotenuse L upon a. Perpendicular by base. So L upon r. So from here, what I can say, L equal to r tan phi, and from here dl I can write r, because r is a constant from here to a given point है. r a tan phi का differentiation it will be sec square phi and d phi आ जाएगा. Okay, now all this value if I put in this equation, it will be mu naught upon 4 pi
I, instead of dl, I will write r sec square phi and d phi, and instead of sin theta, what I can write cos phi, and divided by a square means what I can write r divided by cos phi whole square. Okay, and that is mu naught upon 4 pi, mu naught upon 4 pi I, you see यहाँ पर एक cos square phi आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा. Again it is sec square phi, and sec square phi and cos square phi are just reciprocal, they will cancel each other. So and here it will be r square in the denominator and in the numerator r, so 1r will cancel, so I divided by r. What are the remaining term? Cos phi and d phi. So cos phi and d phi. So this I have expressed this dv in terms of phi. Now the thing is that from this point to this end we have to find out the magnetic field. Okay, for the whole wire, for the whole wire. Okay, now we have considered only for this section. If I consider for the whole wire means, okay, from if I connect it these two ends, if I connect with this, and this is, if I take, suppose this angle is that phi 2, and this angle from here to here, this angle is, suppose that phi 1. Okay, so it means that because the variable is phi, and we take any point, a point, any angle in between this phi 2 and phi 1. Okay, so if I integrate for the whole where, I mean y to x or x to y, for the whole where, what will be the magnetic field? It will be b, you have to integrate of this dv, and mu naught upon 4 pi I divided by r and cos phi d phi. Now what should be the limit of this integration? This phi, you see, now if I take this is a reference point, this is a reference point. When I take this elemental length at this point, this phi will be 0. And if I take elemental length along the down in the below the 0, it means it will give you the phi 1, but phi 1 will negative because it is below that 0 reference level, and above the reference level it will be phi 2, but that will be positive phi. So that is why I will take that phi 1 as a negative phi 1, and phi 2 as a positive phi 2. Now we got the point. So if I take that mu naught upon 4 pi I upon r, and cos phi integration means sin phi, and your integration limit phi 2 and phi 1. So it will be mu naught upon 4 pi I upon r cos sin phi, so I have to put here sin phi to upper limit minus, so sin phi 1, but a minus sign. Again minus of sin minus phi 1 means minus of sin 1, psi phi 1, it will be positive, so I can write here sin phi 1. So this relation, so what I have got this relation, finally your relation is your B, total magnetic field because of the whole wire, mu naught upon 4 pi, that I upon r, and that is, so if I take phi 1 first, it will be phi sin phi 1 and sin phi 2. So this formula is a very, very important formula. We will use this formula to find out the magnetic field for different purpose. So ये मैंने डिस्क्राइब किया क्योंकि ये कैसे हमें ये आ गया, ठीक है. अदरवाइज आप इसको भूल जाइए, it will not come in your examination. This formula, application of this formula will come, so that we will discuss here. Okay, इसको आप भूल जाइए, ठीक है. इसको आप याद नहीं रखना है. अगर अभी लोअर क्लास में अगर किसी को सिखाना चाहते हो और या फिर कंसेप्ट के लिए अगर अभी जानना चाहते हो तो वो आप रख सकते हो. Otherwise no need to remember these calculations. Okay, now this is a very, very important formula. This is a very, very important formula. What, see what I got, that यही था हमारा प्रॉब्लम ना,
at point P at a distance r x y, तो what will be the magnetic field at point P? What ये था हमारा phi 1 and this one was your phi 2, phi 2. Or sometime you if you take this is phi 1, this is phi 2, it will कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, because this angle we are taking what? If I take this one phi 2 and this one phi 1, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? Because both are sine of the angle. अगर एक cos में एक sin में होता then it will कुछ प्रॉब्लम आ जाता. तो यहाँ पर आप देखिए, एक अगर phi 1 मान लिया, दूसरा तो वो obviously phi 2 हो जाएगा. Okay, now the thing is that it is this is the magnitude of magnetic field at point P. What will be the direction? Current का direction यहाँ पर था. What will be the direction of this magnetic field? See, this magnetic field, what you have to use this right hand rule, Fleming right hand rule. You put your thumb along the direction of current. And this end of this finger, this finger, you point towards the point, at what point we have to find out a magnetic field is just toward this point, and you see the other fingers in which direction. You see the other finger, in this case it is inward direction, right? Keeping always this thumb along the direction of current, and you see it is inward direction. So this will be the magnetic field direction at the point P. Okay, बात समझ में आ गया? ठीक है. So it depends on किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये एंगल और ये एंगल. इसी हिसाब से हमने यहाँ पर एक्सप्रेस किया. यहाँ पर लेंथ आ गया था, क्या लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा क्या? एट पॉइंट P लेंथ के ऊपर हमने डिपेंड नहीं किया. इट इज इंडिपेंडेंट, यहाँ पर डिपेंडेंट नहीं है. ओके, phi 1 एंड phi 2 के ऊपर डिपेंड है. एंड r पॉइंट, अगर इस पॉइंट को मैं इधर लूंगा तो इट विल बी डिफरेंट. If I take along at this point, it will be different. If I take very infinite distance, अगर very far away from this where infinite distance, in that case you will get zero magnetic field, because at r equal to infinity, 1 upon infinity will be here, and 1 upon infinity means 0. Now look at this point. If I take the point along this one, in this direction, ओके, P पॉइंट इस बार यही ले लिया मैंने, और ये जो R है और यहां से यहां तक मैंने R ही मान लिया. एंड दिस इज सपोज यू नो दैट phi 2, दिस इज सपोज यू नो दैट phi 1. The magnitude will be same along in this direction. In this side the magnitude will be same, but your direction will be different. How? You see, for use right hand rule, you keep your thumb along the direction of current, and you point the finger का जो end है is just make it towards the point, and you see the other fingers coming towards you outward from the board. So at this point the direction of magnetic field will be outward from the board. बात समझ में आ गया? और एक बात देखिए, तो अगर पॉइंट उल्टा पलटा कर देंगे then magnetic field direction at the same direction, यहां से अगर this point में r direction, तो magnetic field magnitude will be same, but the direction will be different. Now if I reverse the direction of current like this, पहले ऊपर था, इस बार नीचे आ गया, तो आप देखिए इस वाले केस में क्या करेंगे आप. इस बार you put your thumb along the direction of current and you point, इस पॉइंट को मैंने इसमें कर दिया, and you see the other fingers will be inward. अगर मैं रिवर्स कर दूं करंट का डायरेक्शन, so at point P इस बार ये इनवर्ड डायरेक्शन में होगा. और इसको अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं, हालांकि ये तो बहुत ही इतना बेंड नहीं हो रहा है मेरा हाथ. ओके, so it means like this, you see. So I put my thumb along the direction of current, and इसको मैं towards the point रखूंगा. What will be the other fingers along this direction? The other fingers is along this direction. That means it will be outward from the board. It means, you see, if I reverse the direction of current, the magnetic field also changed.
because of the direction of the magnetic field will be changed. Now basically होता क्या है, when I say a wire, straight wire and current is flowing along this direction, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है हर पॉइंट में चेंज होता है डायरेक्शन. अच्छा मान लीजिए कि ये एक ऐसा पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. दिस इज जस्ट लाइक ए सर्कल, दिस लाइक ए सर्कल. एट अ पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इनवर्ट आया था. इनवर्ट का मतलब क्या है, ये जो है ना यहां से इसका ये जो आर है, आर का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए. बात समझ में आ गया. आर का इनवर्ट है बट ये आर का परपेंडिकुलर होना चाहिए. बात समझ में आ गया. यहां पर क्या होगा, मतलब यहां पर इस तरीके से अगर यहां पर मैं आर लूंगा तो आर का परपेंडिकुलर, अगर यहां पर मैं आर लूंगा इस पॉइंट में परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा. इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूं आपको अभी. सपोज this pen is a wire, straight wire, okay, straight wire. Current is flowing upward direction. You got my point? Current is flowing along this direction. At point this, what will be the magnetic field? किस में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा. At point this, what will be the magnetic field? इस डायरेक्शन में. At point this, what will be the magnetic field? इस डायरेक्शन में. अगर करंट का डायरेक्शन अपवर्ड हो, at point this, what will be the magnetic field direction? Along this direction. So it will, that means surrounding, always it is tangential, that means this r, यहां से जो r आएगा and magnetic field direction will be perpendicular to each other. हमेशा यहां पर होगा तो इस डायरेक्शन में, यहां पर होगा तो इस डायरेक्शन में. That is, it is in 2D plane. That is why we are saying that inward at this point it is outward, it is inward at this point it is outward. Okay, you got the idea? So this magnetic field will vary at different point. Although if you take a circle or it is tracing a circle, but the direction of the magnetic field will be different. I hope you got the idea how the magnetic field direction vary. Now अगर ये बात समझ में आ गया, then let us take some examples. यही इस बार जो नेट में क्वेश्चन आया था. Let us take some examples. Suppose you have wire that is infinite wire, and at a perpendicular distance p and at distance r, what will be the magnetic field? ठीक है. अब देखिए हमारा जो अभी अभी निकल के आया था वो क्या था, यहां तक रेस्ट्रिक्टेड था, यहां तक एक्स वाई था, वही इसका फॉर्मूला ये है. And this was your that phi 2 and this was your that phi 1, right? Now when it was a finite wire, that is why I can write here it is a straight wire or it is finite wire. ये finite के लिए था ये फॉर्मूला. But this time I am going to find out the magnetic field because of infinite wire. So let us write for infinite wire, and that is straight wire. Okay, now see, so if I that DJ जो finite था इसको के मैं extend कर दूं, so if I increase the length of the wire along this side, अगर यहाँ पे कर दूं, so this phi angle will increase, right? phi 1 angle will increase. Again अगर यहाँ तक कर दो phi it will increase. अगर इधर जाते जाते if I that extend this end of the wire up to infinity, क्योंकि इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, that up to infinity it will be just like this. up to infinity ये वायर के साथ क्या हो जाएगा, ये इतना पैरेलल, मतलब ये जो this angle, this phi 1 angle it will be your कितना हो जाएगा, infinity जाके ये angle your क्या आ जाएगा, with that r it angle phi 1 angle will be your 90 degree. Similarly if I increase the wire length, ये phi 2 increase हो जाएगा, phi 2 increase हो जाएगा, phi 2 increase and up to infinity you will get like this, and this phi 2 angle will also be 90 degree.
So for an infinite wire at point P, what will be the magnetic field? So I have to put sign of phi 1 and phi 2 90 degree. So here directly I can say mu B equal to mu naught upon 4 pi I by R, and sine 90 degree plus that sine 90 degree, and sine 90 means 1, so it will become 2, so 2 mu naught I divided by 4 pi R, so this will be your 2, so mu naught I divided by twice pi R. So this is the magnetic field because of infinite straight wire at a point at a distance R. ठीक है, at point P at a distance R. This is magnitude. How you will find out the direction? Again you अच्छा current का direction क्या था, ये था. Okay, if put the direction of current like this and you see the other fingers, it will be inward, so inward direction में आया था, so the direction will be inward. So if I reverse the direction of current at point P, the magnitude will be same, but at point P you see it will be outward direction at this point if I reverse the direction of current. Okay, or if I take the point here, then it will be different. बात समझ में आ गया? यही क्वेश्चन आया था CSIR में इस बार कि 3 स्ट्रेट इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर था, 3 इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर था like this infinite, this dot dot means it is infinity, and it was at 0 point it is minus d distance, it was plus d distance. At what point find the locus of the point at which the magnetic field is 0, the net magnetic field is 0, और सारे में क्या था, I current पास हो रहा था. तो उस वाले केस में क्या करना था, इसका मैंने सॉल्यूशन I uploaded a solution in my YouTube channel, so if you want to see the solution you can watch that video. Okay, so वहां पर given था, तो आप देखिए यही फॉर्मूला वहां पर यूज किया गया. You got my point? Now यहां पे किसी का कोई डाउट है? डाउट तो होना नहीं चाहिए. Now let us take straight wire हो गया. So we have discussed for straight wire for finite case and infinite case. Now if I say if the wire is just like curved wire, and you have to find out the magnetic field at point P, and this distance this is just an arc of a circle. Where इस तरीके से है, I current is flowing and at a distance R, and this angle is suppose that alpha. What will be the magnetic field at point P? So directly I want to write down because we need the application of this part. इसका मैं describe कर सकता हूँ, I want to उसको मैं derive कर सकता हूँ, but here I don't want to derive that formula because वो time थोड़ा सा consume हो जाएगा यहाँ पर. So directly that B equal to कितना आएगा, mu naught upon 4 pi I divided by R, I divided by at what distance, and multiplied by the angle subtended. So यहाँ पर कितना है, mu naught upon 4 pi I upon R, this angle is alpha. Okay, then what will be that, this is the magnitude, what will be the direction this time you see the rest of the fingers I will take along the direction of current, and you see your thumb in which direction, it is in inward direction. So at this point it will be magnetic field direction will be inward. So sometime depending on the situation, sometimes we will say the thumb will keep thumb along the direction of current, then this fingers will give the direction of magnetic field. Sometimes we will say these fingers are direction of current, and then in that case the thumb will give the direction of magnetic field. तो हम कंडीशन के हिसाब से करेंगे. अगर इस टाइप का कुछ कार्डी वायर है तो हम इसके यहां से करेंगे. अगर ये करंट का डायरेक्शन उल्टा कर दूं तो सेम मैग्नीट्यूड होगा, बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड. ओके, बात समझ में आ गया. यही दो फॉर्मूला को हमने यूज करके अलग अलग एप्लीकेशन लेंगे. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज यू हैव ए सर्कल and current is flowing like this at the center of the circle, and this radius is this radius is suppose r. At the center हो, what will be the magnetic field, कितना होगा डायरेक्टली आप बताइए. B इक्वल टू, यही फॉर्मूला आप यूज करिए, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I करंट फ्लोइंग एंड R इज द रेडियस. ठीक है. नाउ व्हाट विल बी द एंगल, यहां पर कितना एंगल होगा. देखिए इसमें कितना एंगल था,
this angle was alpha. If I start from here and from here to what will be the value of angle, कितना आ जाएगा, total angle subtend कितना करेगा 2 pi, because एक सर्कल में कितना एंगल होता है 2 pi होता है, 2 pi आ जाएगा. So your I know that ये कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा mu naught I upon 2r. So this will be the magnetic field at point O, but what will be the direction, again you curl your fingers, other fingers like this and you see thumb is inward, इस तरीके से आ जाएगा. ये तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा. You got the point? Now इसी ये सारे एप्लीकेशन हमने पढ़ लिए. अब देखिए और एक बात समझिए यहां पर. Suppose, so we have got, if it is a state where I current is flowing at a perpendicular distance, we got a magnetic field. Okay, non-zero magnetic field यहाँ पर हमने देखा था कुछ वैल्यू आएगा. Okay, now if I say that the same where I current is flowing, but this time if I take the point at here, at point P is here suppose. अच्छा, जब भी मैं बात करूंगा this is perpendicular distance, at a perpendicular distance means these are called equatorial point, and along the where if I say along the where if I take the point, this is called your axial point. It means इस where का axis के ऊपर ही है. Okay, these points are called axial point, this perpendicular or equatorial point. When it is an axial point, then what will be the magnetic field at point P because of this where? कितना होगा? सोचिए, एक बार सोचिए कितना होगा. See, what will be the magnetic field? Tell me one thing. If there is no current, यहाँ पर can you find out? Can you see any current around this point? आपको कुछ करंट जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना. So if there is no current, तो आप यहाँ पर क्या लिखते थे? B equal to mu naught upon 4 pi I by R and sin phi 1 and plus sin phi 2. If there is no current, I is equal to 0, so your B value will be 0. बात समझ में आ गया ना. तो यहाँ पर करंट ही नहीं गया. करंट, मैग्नेटिक फील्ड कहां पर प्रोड्यूस होता है? इफ दिस इज एन वायर एंड करंट इज फ्लोइंग, द मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस सराउंडिंग द वायर, नॉट एट पॉइंट पी, क्योंकि देयर इज नो करंट, यहां पर कोई करंट ही नहीं है. इट विल प्रोड्यूस व्हेन द चार्ज इज मूविंग, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग द वायर. इस तरीके से प्रोड्यूस होता है कि नहीं. यहां पर होगा इक्वेटोरियल पॉइंट में आप जितने पॉइंट लेंगे दैट मैग्नेटिक फील्ड विल बी नॉन जीरो. बट एट एन एक्सियल पॉइंट इफ देयर इज नो करंट, यहां पर कोई करंट ही नहीं है, सो द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस विल बी योर जीरो. बात समझ में आ गया. अब देखिए इसका एप्लीकेशन करते हैं. सो यू कैन नोट डाउन ऑल दिस पॉइंट. सी, once I give the example, once I sometime if I say something, some tricky point, those you can just note down, because वो अब बाद में आपको याद नहीं रहेगा. That is why I suggest you to note down those points also. Now this time, okay, so if I take, ये बाद में अभी बता दीजिए. Suppose this is a semicircle, I current is flowing at point P, what will be the, and this radius is R, at point P what will be the magnitude of the current, magnitude of the magnetic field and your direction कितना होगा? अब बता दीजिए. B equal to mu naught upon 4 pi I divided by R, and what will be the angle subtend here? कितना एंगल करेगा यहां से यहां तक? pi एंगल. You got the point? And what will be the direction? ऐड कर दो, inward. Now if I take the wire like this, at point P what will be the magnetic field at point P, और यहां से यहां तक that is suppose R at point P कितना होगा बताइए. See, for this type of problem you have to make the section first, क्योंकि ये जो वायर एक ही वायर है बट इसका अलग अलग शेप है. देखिए, फर्स्ट यू गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. अगर करंट इस तरीके से आ गया, देन करंट विल कम लाइक दिस, देन करंट विल कम लाइक दिस. ओके, सो फॉर दिस सेक्शन यहां से यहां तक
यहां से ये इस सेक्शन के लिए अब देखिए इस पॉइंट में फाइंड करना है फॉर दिस सेक्शन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज फॉर दिस सेक्शन एट द एक्सियल पॉइंट जस्ट अभी हमने जो कहा था यहां पर for the axial point for this section what will be the value of magnetic field that is 0 and for this section current is going na but for this section the magnetic field at point P ye again axial point mein hai that is B equal to 0 and for this section what will be the magnetic field at point P that is equal to mu naught जो हमने अभी देखा था mu naught by 4 pi and I by R and your पाई एंगल यहां से यहां तक कितना एंगल करेगा यहां से यहां तक पाई एंगल करेगा एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन यू मेक कार्ड लाइक डायरेक्शन ऑफ करंट you see thumb is inward okay so very simple let us take a different problem थोड़ा सा complicated this time for the upcoming exam this type of problem is very important see this was net examination में आया था net question this is net question यही आया let me draw first ये एक था question okay and इसका जो था ये था your A radius bigger ये था B radius find the magnetic field at point P magnetic field at point P क्या होगा see for solving this was net question okay this type of problem for solving always try to make the section one section will be if I say it is suppose you know that P and Q ये एक section है P Q R and S okay how many sections are there this PQ one section QR one section and RS RP again SP again one section so let us first give the direction of current okay because for finding the magnetic field direction so you need a direction of current okay so if current is flowing like this the current will come like this the current will come like this because these are where यहां पर आके रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा यहां पर where है current will come like this okay at point P because of this अच्छा ये P हो गया ना let us take this is O point okay at point O because of this PQ what will be the magnetic field कितना हो जाएगा this O point is for this section it is an axial point 0 बन जाएगा for this section that magnetic field for RS section again for this section this point is axial point it will be 0 and for this section it is not axial point so that means magnetic field because of Q and R तो कितना हो जाएगा जस्ट अभी हमने देखा था mu naught upon 4 pi I divided by what is the radius is A and what is the angle subtend that will be the pi you got the point so this is the magnitude what will be the direction you make the other fingers like in the direction of current thumb is inward so ये हो गया ये सेक्शन बचा है क्या for you know that SP section so magnetic field for SP section the current अच्छा first let us take the magnitude mu naught upon 4 pi I divided by यहां से यहां तक रेडियस कितना है B है and what will be the angle subtend कितना करेंगे यहां से यहां तक pi angle but what will be the direction this time the current is flowing like this and you see thumb is towards you outward from the board so it will give the direction of magnetic field so if I find out the total magnetic field B okay इनके लिए तो 0 0 हो गया no need to add this 0 0 okay and this will be one is inward direction one is outward direction so in which direction you want to take the resultant magnetic field so let us take inward direction so ये outward है अगर इसको मैं inward लिखूं so I have to give a minus sign here mu naught upon 4 pi IA pi minus mu naught upon 4 pi I divided by B pi why I am taking minus sign because I am taking inward direction okay inward so कितना आ जाएगा mu naught upon 4 pi I pi by okay I pi is a constant take common
1 upon a minus 1 upon b. Okay, so pi pi cancel, mu naught I divided by 4 1 upon a minus 1 upon b. So you have to see the options. अगर आउटवर्ड में है, कभी कभी अगर आउटवर्ड में रिजल्टेंट निकालना है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा. बात समझ में आ गया ना? तो ये आपको देखना है. सो दिस वाज आस्क्ड. तो ये मैं अभी यहां पर थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, बट वंस यू आर एक्सपर्ट इट विल टेक हार्डली 1 minute. Hardly 1 minute. So these are the very simplest question. Let us take a different question. Now this time, see, if I give like this, okay, so from at this point P, you have to find out the magnetic field, and this this is just like a part of it is a semicircle, और ये एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट बट ये इनफाइनाइट तक गया है. तो इसका जो रेडियस है, ये रेडियस है आपका r. ओके, सो एट पॉइंट P, और अगर ये रेडियस r है मतलब यहां से यहां तक भी r ही है. ओके, r ही है at point P. So what will be the, and direction of current is I, like this, along this direction. What will be the magnetic field at point P because of this shape? See how many sections you have here. 3 sections. One is because this section, another is this section, another is this section, right? So for this, first let us give the direction of current. यहां से ऐसे आएगा, यहां से ऐसे आएगा, यहां से ऐसे आएगा. Now for this section, what will be the magnetic field first? Now this section, if I redraw here, I want to redraw because of your understanding. ये P है और ये R है. Tell me one thing. जो अभी हमने क्या कहा था कि अगर ये एक स्ट्रेट वायर है, ये वायर है at a perpendicular distance r, उस वाले केस में your magnetic field was B equal to mu naught upon 4 pi I divided by r and sin phi 1 plus sin phi 2. phi 1 कौन सा था, phi 1 को 2 कौन सा था, वो फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज दोनों साइन में है. अगर एक phi 1 है, दूसरा phi 2 होगा ऑब्वियसली. नाउ ये जो इंफिनिटी है, बट दिस एंगल अगर इफ इट गोज टू इंफिनिटी, this this where if it goes to infinity, तो एक एंगल कितना आया था यहाँ पर 90 डिग्री. सो लेट अस टेक दिस phi 1 इज ए 90 डिग्री. अगेन ये इस तरीके से था ना कुछ, अगर देखिए इस तरीके से था. ओके, अगर ये पॉइंट को यहां पर ये कितना था तो phi 2 था. क्लियर? सो इफ आई इसको मैं मिटा दूंगा इसको, इफ आई दिस and if I bring at this point, तो ये phi 2 एंगल धीरे धीरे यहाँ पर मार्च हो जाएगा. तो phi 2 एंगल कितना बन जाएगा बताइए, यहां जाके phi 2 एंगल कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा. सो योर phi 2 इज 0. तो वही है इस सेक्शन में है. ये तो सेक्शन में रीड्रॉ क्या है, that is just like, so I have cut this section and I have redrawn this section. Okay, so what will be the magnetic field for this? Mu naught upon 4 pi I divided by r, and sin 90 means 1 and sin 0 means 0, it will be 1. But what will be the direction? Direction, you see, keep thumb along this direction, you see it is inward. Because of this section, this will be the direction of magnitude and it is inward. अच्छा B1 लेता हूं, ये सेक्शन 1 सेक्शन लेता हूं, ये 1 सेक्शन, ये सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन. Now for this second section, that is suppose you know that B2, already you know that mu naught upon 4 pi I divided by r, what is the angle substance, that is pi. Again you see the direction of current along this inward will be the direction of magnetic field. हो गया दो सेक्शन का. Now for the third section B3, again you see this time अगर इसको मैं redraw करूं just like this, right? यही है, but this time the current
along this direction. तो इसमें देखिए एक एंगल तो यहां से 0 हो जाएगा, एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा. तो लेट अस टेक दिस टाइम दैट एक एंगल 90 डिग्री बन जाएगा और एक एंगल 0 हो जाएगा. ये एंगल कितना है? लेट अस टेक दिस एंगल इज 0, दिस एंगल इज 90 डिग्री. ठीक है. ओके, नाउ व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? इतना ही आ जाएगा. बट द डायरेक्शन क्या होगा? दिस टाइम यू हैव टू you keep your thumb along this direction. You see again other fingers is inward. That means this time also the magnitude will be mu naught upon 4 pi I by r, and it is inward. So all the three direction of magnetic field will be inward. So I can write down that the total B equal to that B1 plus B2 plus that B3. So it will be your कितना आ जाएगा यहाँ से? अब ये करेंगे तो म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाय आर प्लस म्यू नॉट अपन 4 पाई सो आई पाई बाय आर सो प्लस म्यू नॉट अपन 4 पाई सो आई बाय आर. सो द रिजल्टेंट विल बी इनवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो म्यू नॉट अपन 4 पाई आई बाय आर टेक कॉमन, ये तो 1 हो जाएगा, यहां से एक पाई हो जाएगा प्लस 1. So it will be your mu naught upon 4 pi. So I by r, that pi plus 2 or 2 plus pi. So inward direction. So this is the answer. So very simplest. These are the very simplest method. Okay, I hope you got that. You can note down. So you can pause it and you can note down. So let us take different example. So very simple, these questions are very simple once you know the concept. और एक एग्जांपल देता हूं मैं, इसको आप करिए. इसी तरीके से दिया है मैंने इस एग्जांपल को. अच्छा, let me draw first. Okay, so this is just one arc of a circle. Okay, one arc of a circle. So at point at point P you have to find out the value of magnetic field and direction. यहाँ पर I current is flowing like this, और यहाँ से यहाँ तक जो इसका जो आर्क का जो रेडियस सर्कल का रेडियस है, that is suppose r. यही आपको फाइंड करना है. एंड इट इज गिवन दैट दिस एंगल इज सपोज दैट पाई बाय 3. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी. तो कितना होगा बताइए. अच्छा, फर्स्ट यू से दैट ये वायर कहां से आ गई? ये है ऐसा आ गया. ये तो वायर नहीं है, ये रेडियस है. दिस इज द वायर लाइक दिस एंड दिस इज द वायर, है कि नहीं? फर्स्ट यू गिव इट द डायरेक्शन ऑफ करंट. इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा. करंट का डायरेक्शन हो गया. नाउ सी एट पॉइंट P, दिस P पॉइंट, फॉर दिस सेक्शन दिस P पॉइंट इज एक्सियल. सो कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा? 0. एंड फॉर दिस सेक्शन दिस P पॉइंट विल बी एक्सियल. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? दैट इज 0. फॉर दिस आर्क दिस P पॉइंट इज नॉट एक्सियल. सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? इसके लिए 0 हो गया, नो नीड टू राइट. That magnetic field B equal to mu naught upon 4 pi I divided by, and the radius is r. And what will be the angle subtend from here to here? कितना होगा? This angle. अगर टोटल एंगल क्या होता है सेंटर का सर्कल में, कितना होता है? 2 pi. अगर if I say this angle is given pi by 3, if I subtract the total angle, this is from total angle, I will have this angle. So if it is 2 pi by 3, 2 pi minus pi by 3, तो ये कितना आ जाएगा? 2 pi minus pi by 3. So you will get your 3 LCM, 6 pi minus pi. So it is 5 pi by 3. Okay. So this angle is 5 pi by 3. So 5 pi by 3.
What will be the direction? This is current direction. Inward will be the thumb direction, will be the magnetic field direction. Okay, so कितना easy है. Okay. Let us take another question. ये भी CSIR नेट में आ चुके हैं. This was also asked in CSIR net. CSIR net. These all questions are very very important. Suppose you have a square. You have a square, okay, having side A. So you have to find out the magnetic field at the center O or at the center P of that square. Find out the magnetic field and the direction of current is like this. Find. कैसे आप find करोगे? Very simple. You see, जब भी आप देखोगे this point, so this is just like this side is just like a straight wire, finite wire. So I have to find out. So for this, better you draw the diagonal. Diagonal. ये आपको अपने तरीके से draw करना पड़ेगा. And now see, if it is a square and if this side is suppose A, so diagonal intersect यहाँ पे करेगा. And from here to here, what will be the distance? A by 2 होगा. This distance will be your A by 2. From here to here, it will be A by 2. This will A by 2. This will be A by 2. Okay. And for a square, if the angle अगर diagonal intersect करेगा तो यहाँ पर कितना angle बनाएगा? भाई 90 degree. So 90 degree it is I am taking a perpendicular distance. Okay. Perpendicular bisector 90 डिग्री एंगल को अगर करूं मैं यहाँ पर इक्वली डिवाइड करेगा कि नहीं, तो ये कितना बन जाएगा 45 डिग्री. This angle will also be 45 degree. You got the idea? Now you see, this is just like this, ना? ये हो गया. ये 45 degree. This is 45 degree, and this side is A by 2. You got the point? So your B will be कितना आ जाएगा for this side and current is flowing like this. Mu naught upon 4 pi I divided by this time A by 2. Okay, A by 2. And one is sine 45 degree, another is sine 45 degree. Because phi 1 and phi 2 45 हो जाएगा. तो इसको आप करेंगे कैसे? Mu naught upon 4 pi, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, twice I by A. And what is the value of sine 45 degree? तो क्या है? 1 upon under root 2 plus 1 upon under root 2. So better I will write 2 divided by under root 2. ठीक है, अगर 2 divided by under root 2 को फिर से मैं लिखूंगा तो ये 2 and 2 4 हो गया, 4 से कट जाएगा. सो म्यू नॉट अपॉन, तो ये 2 4 कैंसिल हो गया, म्यू नॉट अपॉन पाई आई बाई ए एंड अंडर रूट 2. यही हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा कि नहीं? This is the magnitude. Now what will be the direction for this current is along this direction? If this point is, you see, it is inward direction. For this it is inward direction. Okay, here I am giving cross mark, means for this side at point P the magnetic field direction. Now if I see current इस तरीके से आ जाएगा, current will come like this, current will come like this, current will come like this automatically. So but for this side, what will be the magnetic field at point P? Same यही side यहाँ पर होगा. If I take from here to here A by 2 and this angle 45, this angle will be 45. So same magnitude I will get. So this is suppose first side, this is second side, this is third side, and this is suppose fourth side. So your B1 I have got this, and it is inward direction. So what will be the B2 second side? Same magnitude I will get, under root 2 pi I upon A. इतना ही होगा. But this time what will be the direction of the magnetic field? You see, you have to see that this time you put yes, this time it will be just like this, na? Just like this. You put your thumb along the direction of current and you see it will just कुछ यूं ही था like this. If I redraw it here
at point P. तो ये था along the direction of current thumb. You see, fingers are inward. So it means here also it is inward. But here for this side again same magnitude I will get. This time you see again thumb you keep along this direction of current. You see other finger inward. तो ये inward हो गया. For this side same magnitude आ जाएगा. You see again it will be inward. So सारों साइड का जो है ये इनवर्ड डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड एंड ऑल वैल्यूज आर सेम. सो नो नीड टू फाइंड आउट फॉर ईच साइड, बट सिर्फ एक साइड का आप लिख लो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 पाई एंड ए. तो एक साइड सारे साइड सेम है और सारे साइड का डायरेक्शन सेम है, तो चार से एक साइड का ये होगा तो चार साइड का मल्टीप्लाइड बाय 4 ये होगा, ये इनवर्ड डायरेक्शन. बात समझ में आ गया ना? So this was the question. It was also asked CSI ने. Sometime see the same condition. Okay, इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ. ये भी आ चुका था, बहुत बार आ चुके हैं ये. जेस्ट में या गेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन. जेस्ट एंड गेट क्वेश्चन. क्या कहा था कि ए बी स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर. And this time you have to find out the magnetic field. Okay, magnetic field at point this, at point P. This time I current is and side is suppose A. Okay, at point P, not at the center, at point P. What will be the magnetic field? And from here to here, this distance is suppose that is suppose B. Okay, at point P. What will be the magnetic field? इस बार क्या होगा? इस बार आपको फाइंड क्या करना है? सो फॉर दिस सो यू हैव टू फर्स्ट गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट. गिव लाइक दिस आ जाएगा, इस तरह के आ जाएगा. यू सी फॉर वन साइड यू टेक फॉर फर्स्ट फॉर दिस साइड. इस साइड के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट किस में आ रहा है? डायरेक्शन ऑफ करंट किस में आ रहा है? इस साइड के लिए. ओके, डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें आ रहा है और जो पॉइंट है ये, तो ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग दिस डायरेक्शन. अच्छा, तो इसको कहा जाता है, इस पॉइंट को, इस प्रॉब्लम को देखिए अगेन यू सी. और मान लीजिए कि ये जो है ना, ये a/2 है, b मैंने नहीं कहूंगा, ये सपोज दिस इज a/2 एंड परपेंडिकुलरली एट पॉइंट दिस. ये टोटल साइड a था, ये a/2 था. You got up my point? Suppose if it is a a/2 and it is perpendicular bisector of this side, if it is a/2 and perpendicular bisector of this side, okay, so then for finding the magnetic field because of this, so you need this angle, right? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल कितना हो जाएगा? ठीक है, देखिए ये एंगल कितना हो जाएगा? इफ दिस साइड इज टोटल, द साइड इज a एंड दिस साइड विल बी दैट a/2, दिस विल बी a/2. अगर ये भी a/2 हो जाएगा, अगर ये भी a/2 भी गिवन है, ठीक है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा? आप देखिए ये एंगल 45 बनेगा कि नहीं? तो अब 45 जो साइन एक φ1 एक φ2, तो यू विल टेक you will find the magnetic field at this point and you will see the direction will be outward. Now for this इसके लिए इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये आपको फाइंड करना है. इसके लिए ओके. सो इस वाले केस में आप देखिए, इसके लिए तो हमने निकाल पाएंगे. अब देखिए इस साइड के लिए कितना होगा, इस साइड के लिए भी आप निकाल पाएंगे, क्योंकि इस साइड के लिए यहां से अगर a2 है एंड ये a है, सो a प्लस a/2 आ जाएगा. यू गॉट दिस पॉइंट? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है. ओके, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है. सो व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड? अच्छा, इसको मैं बाद में करूंगा. सो लेट अस, इसको मैं रहने देता हूं.
मेरे होमवर्क की तरफ से। ओके, सो मैं इसको होमवर्क करूंगा, या फिर क्वेश्चन को, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, आई एग्जैक्टली कैन नॉट रिमेंबर दैट क्वेश्चन, अदरवाइज ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं वो मुझे भी पता नहीं है, बट द थिंग इज दैट यू हैव गॉट द आइडिया हाउ टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको, इस प्रॉब्लम को मैं देखूंगा, फिर से सॉल्व करूंगा। ओके, लेट अस टेक दैट केस। सपोज, अच्छा, if you have an equilateral triangle having side A and a current is flowing like this, so you have to find out the magnetic field at the centroid, at the center, at point P. Find magnetic field, find B at P. ये आपका होमवर्क है। क्या करोगे आप? निकालोगे ना। देखिए, अगर ये A है तो अब यहां से यहां तक डिस्टेंस निकालोगे, एंड व्हाट विल बी दिस एंगल, व्हाट विल बी दिस एंगल, ये एंगल निकालोगे। एक साइड के लिए हो गया, फिर ये करंट के डायरेक्शन देंगे, फिर ये करंट का डायरेक्शन दोगे, तो तीनों साइड के लिए देखेंगे। अच्छा, इसके लिए डायरेक्शन इधर ही होगा, इसके लिए डायरेक्शन इनवर्ड होगा, इसके लिए डायरेक्शन इनवर्ड, तीनों के लिए डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड होगा। ओके, सो एट पॉइंट वो आपको फाइंड करना है। निकाल पाओगे कैसे? ये डिस्टेंस निकालना है और ये एंगल निकालना है। दिस इज होमवर्क। नाउ सी, लेट अस टेक ए डिफरेंट, वही जो स्क्वायर वाला क्वेश्चन है मैं वही दूंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंसेप्ट अलग दूंगा। आई करंट इस बार क्या कहा कि इस तरीके से है, आई करंट इज फ्लोइंग एंड यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर एट पॉइंट पी। हैविंग साइड, इसका जो साइड है दैट इज ए, स्क्वायर का साइड है ए। दिस टाइम व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। अब इसमें क्या करोगे? ये अगर करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, अगर उसे करना नहीं चाहते हो तो फिर बहुत ही सिंपल तरीका है, शॉर्टकट ट्रिक। देखिए, हाउ मेनी सेक्शंस आर डियर? 1, ये सारे सेक्शन से एक स्क्वायर है और एक है। सी, फॉर दिस सेक्शन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी, 0 आ जाएगा इसके लिए। और अब पहले करंट का डायरेक्शन दीजिए। करंट देखिए, यहां करंट आके इट विल गेट टू पार्ट्स, so it will divide it equally, into two parts, and it will flow, that I by 2 will flow along this side, I by 2 will flow along this side. Here also it will be I by 2, here also it will be I by 2 current, and this I by 2 will come at this terminal and it will come out as I current. For this side it will be axial point, for this side it will be axial point, so zero magnetic field will get. For this side, you see, for this side what will be the magnetic field here? Let us take, that x, jitna hoga x, we are not going to find out. Okay, let us say that is x, but what will be the direction? You see, direction, you keep thumb along this direction, you see other finger outward, it is outward direction because of this side. But the same magnitude you will get here because of this side, because it is square opposite side now. But this time you see, keep your finger like this and thumb is inward. So this magnitude and this magnitudes are same but opposite in direction. So total contribution kitna hoga? 0. For this side, whatever the magnitude you will get here, the same magnitude you will get. For this side, you see it is inward direction. For this side, it will say it is outward direction. So it is inward direction and this is your outward direction. So the net contribution magnetic field at point P because of these two sides are 0. So all the sides are having the 0 magnetic field. यहाँ पर ये साइड के लिए 0 नहीं आया था, इसके लिए 0 आया था, इसके लिए 0 आया था, बट ये इन दोनों के लिए 0 आया, इन दोनों के लिए 0 आएगा. So what will be the total magnetic field? 0. Okay. यही क्वेश्चन एक आया था. और सेम थिंग, इफ आई गिव ए क्यूब, टेल मी क्यूब के लिए कितना होगा? क्यूब. ओके, ये होमवर्क कर लेंगे आप. I current is flowing at the center of the cube. What will be the magnetic field? And the side is A. कितना हो जाएगा? वही 0 आएगा. Why it is 0? Okay, for this side and this side, for let me the direction of current. Okay, ऐसा है.
This current I will divide equally three parts. It will be I by 3. It will be, that I by 3. It will be I by 3. And again this I by 3 will divide along two parts equal to, it will be I by 6. It will be I by 6. This is also along, right, I by 6, I by 6. This will come along I by 6 and this is along I by 6. But this I by 6 and I by 6 will come here and it will make I by 3 here. This I by 6 and I by 6, it will be I by 3. And this I by 6 and I by 6, it will make I by 3. And finally the I current will pass through this. See, for this side it is axial point. For this side it is axial point. For this side, whatever be the value, जितना value आएगा at the center, जितना आपका वैल्यू आएगा वो वैल्यू काउंटर बैलेंस करेगा किसके साथ? अच्छा, इसके लिए जो मैग्नीट्यूड आएगा, जो व्हाटएवर मे बी द मैग्नीट्यूड, जो डायरेक्शन आएगा ये आउटवर्ड, बट इस साइड के लिए यू सी द सेम मैग्नीट्यूड बट इनवर्ड. सो दिस साइड विल गिव जीरो कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड. फॉर दिस साइड एंड दिस साइड तो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. फॉर दिस साइड एंड दिस साइड जीरो हो जाएगा. क्लियर? तो इस तरीके से सारों साइड जो है एक ऑपोजिट साइड का डायगोनल ऑपोजिट साइड का जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो कंट्रीब्यूशन करेगा. सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी जीरो. यू गॉट द आइडिया? दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन CSIR एग्जामिनेशन. सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. ये भी आया था एक क्वेश्चन. लेट मी ड्रॉ फर्स्ट. ओके, ये एक सर्कल का है एंड टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब दोनों कॉन्सेंट्रिक है. ये करंट का डायरेक्शन लाइक दिस. ठीक है, देखिए आप करंट का डायरेक्शन देंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा. ये दोनों वायर नहीं है, ये वायर नहीं है, इसको मैंने ऐसे कर दिया. तो मतलब ये जो बिगर सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, इसका सेंटर एक ही है और इस सेंटर का, इसका रेडियस a है और इसका रेडियस b है. यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज एज अ होमवर्क. कैसे करेंगे? फॉर दिस साइड यू कैन that start from any point. If I start from this point, for this side it will be axial point 0. For this side it will be axial point 0. For this section this angle is 90 degree and b. So for this, if it is a 90 degree, so 2 pi minus 90 degree will be give you this angle. तो आप निकाल पाओगे. So this is also your homework. Okay, see, many problems are there. We'll discuss in the next class those problems. So up to this, we have got the idea how to find out the magnetic for different shape. Okay, at different point, you take those I have discussed here. You take those the point, you just shift the point, you try to find out the magnetic field. तो यहां तक मैंने ये डिस्कस कर लिया. सो इन द नेक्स्ट क्लास, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो क्लास होगा, डेट क्लास विल बी इन आवर ऑनलाइन क्लास. तो यहाँ पर मैं अपलोड नहीं करूंगा, वहां पर ये डेमो क्लास था एक, तो उसमें मैं वो सारे बात बताऊंगा कि किस तरीके से अपलोड करना है. सो इफ यू लाइक, यू कैन ज्वाइन. टिल नाउ द स्टूडेंट्स आल्सो आर ज्वाइनिंग. यू कैन ज्वाइन अप टू 15 December, and in that case through Zoom and online Google Meet I will take those classes. So thanks to all of you.